हेलो टू ऑल ऑफ यू ऑन द किचनॉमिक्स पे आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब कढ़ाई। और कबाब कढ़ाई के लिए हमने इसको प्रोफेशनली मैरिनेट किया है फॉर द चिकन सीख कबाब, और हम सीख कबाब कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा कि वंस वी आर द प्रोसेस हाउ आई एम गोइंग टू मेक द कढ़ाई। सो सबसे पहले हमने किए हैं कबाब मैरिनेट, और मैरिनेट करने के बाद कीमा हमने अच्छा सा धनिया लगा के इसको रख दिया है ट्रे पे। बटर के साथ हमने ऑयलिंग कर दी है। नेक्स्ट स्टेप है कि इसको ओवन में लेके जाना है। ओवन में कब लेके जाना है? जब हमने अपने प्रोफेशनल फ्रिजिडेयर वॉल ओवन का आज आगाज़ है। इसका पहला दिन है ओवन का, हमारे प्रोफेशनल ओवन का, फ्रिजिडेयर वॉल ओवन इन द माइक्रोवेव। और इस फ्रिजिडेयर प्रोफेशनल वॉल ओवन का टेम्परेचर हमने 400 के ऊपर सेट कर दिया है। और आपने देखा कि टेम्परेचर इसका एस्केलेट हो रहा है 299, 302 एंड व्हेन इट विल राइज अंटिल 400, तो उस वक्त हम इस कबाब की ट्रे को इसके अंदर रख देंगे। डायलर हमने सेट किया हुआ पहले से ही 400 के ऊपर, और इस वक्त ये प्रोफेशनल बेक मोड के ऊपर है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक कबाब कढ़ाई। So here we see that it has achieved the target of 400, and now it's a time to put the kebab in that. So I'm going to open it the oven. It's pretty much hot, perfectly for my baked kebabs. And here I take the kebab tray, and for my kadahi, first step is to put the kebabs inside, and we will see that how they will shape up after about 15 to 20 minutes of good baking. This is the light button. When I pressed it, I can see what's going on inside. It's pretty much good and nice, looking very good. I can clearly see my kebabs. And soon again going, I can close the light this way. The broader view I will show you. You can see. And the timer, if I want to set, I can also set the timer later on. We will come back in 15 minutes. So now we are at the 10:25. So already now we are 15 to 18 minutes ahead of after the post time. So I thought that the kebab will be quicker, but I guess my temperature was less, 400, as it should have been until 425 or 450. But still I can see that my kebabs have not turned black and red. They are good color, they have changed the color already, but I don't want to burn them, so I will open them for checking and I will check them. But first of all, why I approached the oven, my professional Frigidaire professional wall oven, it has given me the sound and I had to come, and first of all I will wait and let the steam go out. It's quickly going out, lot of steam, so be careful at this point. And now first of all I will try to move them again. One time I have done it, and just see now it's so good. The color have been changed from the bottom, this color has been changed from here, and it's very good. I have just changed them at the 10 minutes to make it more professional. And this one also I have just see it has acquired its shape, but I still want them to be red from the other side also. And now next step is to check it with a fork, and now I'm going to see it. So let me break it. Yeah, so it is very easily getting off. Looks like to me as it is chicken, so it should be done, but still for the further careful I will be checking it. I hope it's worth it. This is science. And in the meantime, don't forget to close it down so that the acquired temperature may go again to the 400 and may not come down. So finally I have achieved the further 5 minutes, and now it's showing the time 10:32. Still I'm at the 400 temperature.
And it's the baking mode, as I've told you, my one of the professional Frigidaire, professional wall oven. And now if you see the color, how good it is looking, a quick thrush of steam at my face, so be careful. So time to close it down. So I have shut it down, and now very careful with the hot gloves. Just see how quickly they are rolling the kebabs. They are all free from the downside, they are not gathered up, stained up, and I have taken them outside. So till my next steps, just wait and we will be back in 5 minutes. So for the kebab padai, our kebabs are done. So we will be needing. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. कढ़ाई ले ली हमने और अच्छी तरह से इसको ड्राई करेंगे, और नीचे फ्लेम इसका फुल ऑन है, फ्लेम फुल ऑन है, और इसी अवस्था में इसके गर्म होने का वेट करेंगे। और हमने देखा कि बिल्कुल वो हीट पकड़ रही है ऐसे ऐसा, कढ़ाई तेज गर्म हो चुकी है, और ऐसे में टाइम आ गया है कि इसमें हम ऑयल मिलाएं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम ऑयल। ऑयल तकरीबन मैंने 1.5 कप डाला है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta. So अब टाइम आ गया है कि जब ऑयल मेरा पूरी तरह से खुल गया है, तो एट द टाइम टू ऐड टोमेटोज। और अब उसके बाद टाइम आ गया है कि थोड़ा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया जाए। हीट अभी मेरी बिल्कुल भी लो नहीं होगी, हीट इज फुल। तो अच्छी तरह हमने टोमेटो को भून लिया है। ऐसे में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, और हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। मसाले हमारे पूरे हो गए, मिक्स करेंगे मिक्स वाल। और बेबी ने हमारे लिए टोमेटो पेस्ट खोल दी। टाइम टू पुट टोमेटो पेस्ट। कितनी डालेंगे? 1.5 टेबल स्पून। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ।
और यहाँ पर टाइम आ गया है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको फुल फ्लेम पे ले जाएंगे ताकि ये अज्जा जो है वो अच्छी तरह कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेम किया हमने फुल। और टाइम आ गया कि इस टाइम पे हम थोड़ा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल मामूली से धनिया भी डालेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। इस टाइम पे इसको दोबारा एक अच्छा सा रेंज देंगे। हीट हमारी अभी भी स्लो हो, हीट को तेज नहीं करना। कबाब कढ़ाई के लिए जो हमारे कबाब है इसको हमने पीसेस में काट लिया, बड़े बड़े पीसेस। अगर बहुत छोटा कबाब है तो 2 कर लें। हमारा कबाब काफ़ी बड़ा था तो इसके 4 पीसेस कर लिए और अब ये पीसेस रेडी हैं कबाब कढ़ाई में जाने के लिए। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू पुट सम शिमला मिर्च इन ओवर देयर एंड and of course onions. I want them to be red. For the toppings I will tell you where to put. और एक पाकिस्तानी मिर्च हम लेके इसको भी इसमें सजा देंगे। और ये टाइम आ गया है इसमें टमाटर रखने का। टमाटर रखा and now it's a time to on it again to the bake and we will take it to the 400. We will let it warm and then I'm going to put all my veggies inside. If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution. Time to put now my veggies into the oven. I have got the required temperature and my veggies are inside for my kebab kadai. So all the plate is inside and I will be waiting it for 15 minutes and I will be back. I will show you how they look like. So हम सिमर किया और सिमर के बाद हमने इसमें डाली क्रीम। तकरीबन मैं 2 स्पून 1.5 स्पून के हिसाब से डालूंगा and that is enough. टेम्परेचर को खास तौर पे कंट्रोल करना है, यहाँ पर अंडर कंट्रोल होना चाहिए टेम्परेचर। अगर आप खुद चूल्हे पे नहीं खड़े हुए तो इसको हाई पे नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम जब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया शामिल करूँगा। ताकि क्रीम पूरी डिज़ोल्व हो जाए। एंड दिस इज द टाइम जब इसमें कुछ हरी मिर्चें भी जाएंगी। So now is the time for some garnish. What they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. Now it's a time to put some ginger. A final garnishing is going on.
और अगर आपके पास यहाँ पर कोयला हो और कोयला डाल दिया जाए ऊपर तो मज़ा दोबाला हो सकता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोयला मौजूद नहीं है। और इस वक्त मेरी वेजीज जो हैं वो डल हो चुकी हैं और ये टाइम है कि जब मुझे ये वेजीज डालने होंगे ऊपर। This is the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tired of losing. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like. You see it's beautiful layers, oil has come on the top, and literally so Lahore Gwal Mandi kebab kadahi is ready, and we will show you soon we serve. So we're going to serve. They are roasted. Veggies are on the side along with the kebab. Very deliciously cooked. And we will serve it with the Peshawari naan. I will show you how they look like. Very crispy and very beautiful. Till my next video from Kitchenomics, goodbye and take care.